क्या शिवेन, अब मेरे को आंसर थोड़ी ना याद है ऐसे. So when v is greater than root 5 GL, string always remains taut, except for that one exception. And that is also momentary. It is not permanent. It is momentary. Similarly, if v is less than root 2 GL, then the string always remains taut, except for that momentary position when the string becomes horizontal. Anybody now? What is greater than root 2 GL, but less than root 5 GL? हाँ, ठीक हो जाएगा अभी तो. कभी कभी वो वाईफाई में गड़बड़ हो जाता है. What would happen? Okay, what would happen if velocity is less than root 5 GL, greater than root 2 GL? नहीं, 360 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो सर्कल तो कंप्लीट नहीं होएगा. नहीं, नहीं शिवेन, ये गलत. So I'll show this by green. ये रही velocity. नहीं 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 360 नहीं 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 नहीं, देखो क्या होएगा. देखो देखो ध्यान से देखो क्या होएगा. नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो क्या होएगा. ध्यान से देखो. And this is something very difficult to predict. Okay, so if you are not able to predict, does not matter. बहुत ही difficult है. If I give it a velocity which is less than root 5 GL and greater than root 2 GL, then it will definitely go above this red wala thing, and it will definitely not arrive at this blue wala thing. Okay, it will definitely go above this horizontal line and never arrive at the blue line, because for the object, for the string to be as it is in the blue picture, the blue line, the velocity of the object must be root 5 GL. Minimum velocity must be root 5 GL. And if the thing has to be in the good Chetan, बहुत बढ़िया, yes. And if the object has velocity which is greater than root 2 GL, then definitely it will go beyond that horizontal red line. So this is what happens. The object comes here and it has certain velocity v dash. Okay. And at this point, some angle phi is being made. मैंने horizontal angle phi ले लिया है. You can take it with the vertical. In fact, I will take it with the vertical. कोई फर्क नहीं पड़ता है. When the string makes angle phi as shown, the velocity of object is v dash. At this point, the tension becomes 0. And beyond this point, the particle moves
like a projectile. This is what you have to really understand. So the object goes up, v velocity escape pass, object goes up at some angle phi, which we have to work out, of course. At some angle phi, there is some velocity v dash, which again you have to work out. Nothing is given, nothing is known. The object becomes a projectile because the tension in the string goes to zero. And you can do this right now, where you can take that charging wire and you can try to whirl it in a circle such that it does not complete a circle. थोड़ा dangerous है, सर पे चोट ना लग जाए. Such that it does not complete the whole circle, but it goes beyond the horizontal line as well. And you will find and you will see that at some point the tension simply goes away and the object simply behaves like a projectile, and therefore so this point this point is the highest point. Right? The top of the projectile is the highest point. ये आया समझ में सबको? As long as the velocity is less than root to GL, you have nothing to worry about. Apply the work energy theorem, your work is done. Velocity is greater than or equal to root 5 GL, nothing to worry about. गोल गोल घूमता रहेगा. अभी एक question I will give जिसपे हम tension निकाल देंगे as a function of the angle, right? That is also nothing to worry about. We know that tension is never zero, so we just choose an initial point and a final point. We apply the work energy theorem. We know it is going around in a circle. We can find the tension by applying the circular motion concepts. But if you get velocity less than root 5 GL and greater than root 4 GL, you are then in a very big world of pain. Because the question, you can be sure, is going to be very lengthy now. Because it is going to consist of two separate motions. One will be the circular motion. One will be the circular motion. Starts from point 1 to point 2. And then there will be the projectile motion from 2 to 3. So circular motion, projectile motion. And here is the rub. Okay, here is the, इसको जले पे नमक रगड़ना बोलता है, मेरे को बड़ा मजा आता है. Can you look at the green drawing that I have made? Oops, sorry. Look at the green drawing that I have. Does this remind you of something? Look at the green drawing that I have made. Does it remind you of something? Going back to the chapter of projectiles. So this is projectile motion on an inclined plane. And if you remember the formulas of that, जो कि मैंने बोला था नहीं याद रखना है, but if you remember the formula, then this question should be easy. If you don't, then 2 steps और add हो जाएंगे, because you will have to sort of, you remember कैसे करते थे उसको, ax ay निकालते थे
ऑल्दो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें केवल हाईएस्ट पॉइंट निकालना है. चल, so let me then try this question. You want to try it? You want to try or should I solve? Hello, hello, hello. You want to try or should I solve? चलो, I'll give you शौनक अपने आप कर. जब भी मैं बोलता हूँ you want to try और I should solve, ये ट्रिक क्वेश्चन होता है. अपने आप करना है. मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ. Initial point, final point. Apply work energy between I and F. At F, tension is equal to 0. Motion can still be considered circular. Apply projectile motion. So you have to write something here, you have to write something here, you have to write something here. That should solve the question.
So first, summation of work. वो हो ही नहीं सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। टी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर टी जीरो तो होता ही है ना जब व्हेन वेलोसिटी इज रूट 5 जीएल। व्हाट यू मीन इज दैट वेलोसिटी और टेंशन दोनों जीरो हो जाएं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, इसके बियॉन्ड, ये जो मैंने एफ पॉइंट बनाया है, इसके बियॉन्ड the velocity will not be able to sustain circular motion। ठीक है, एक हाँ करो इसको ट्राई। हाँ, नहीं, देखो देखो, summation of work done by earth plus work done by tension, work done by earth is minus mg, whatever the height is, work done by tension we know is zero. So we can figure out the work done by earth by figuring out the height. That is not a big problem, because I see that this is L sine theta and this L. So this will be mgl 1 plus sine theta. Initial kinetic energy, so let me just write this. Final kinetic energy is equal to half mv square minus initial kinetic energy is equal to half m into 4g. अच्छा, वही आ रहा है क्या? शिवेन ने सही आंसर बताया था क्या शुरू में? गुड गुड शिवेन, वेरी नाइस। तुमने बोला ही नहीं पहले, किया।
तो मेरे को यहां से एक रिलेशन मिल रहा है और ये रिलेशन किसके बीच में है? I am getting one relation from here, and this relation is between the V and theta. Okay? This relation is between V and theta. Right? Now, this is the key step. This is something that you have to remember. So, at this topmost point, the object is just at the boundary, right? Just at the boundary. Tension has become zero, projectile motion has started. Well, the thing is that you can never sort of pinpoint कि यहाँ पे projectile motion खत्म हुआ, circular motion खत्म हुआ और यहाँ पे projectile motion शुरू हुआ. So at the point F, we can say both the things. We can say that circular motion is still there. Of course, beyond this point, circular motion is not there. And we can also say that projectile motion starts from this point, because beyond this point or before this point, projectile motion was not there. So what do? If we have circular motion to analyze, we draw the radial axis, we draw the tangential axis, we draw the forces acting on the particle, we find the components. In this case, there is only one force. So this component is mg cosine theta. This component is mg sine theta. So for radial axis, I am going to get mg sine theta is equal to mv square by r, which is L in this case. So this implies that v square is equal to gl sine theta. This is the second relation that we get. प्लस एल करना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से, प्रतीक्षा नहीं, या प्लस एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा करना पड़ेगा. Okay, and then we apply projectile motion. So for projectile motion, we only need to find the maximum height, and maximum height, remember, is uy square by 2g. So in this case, it must be v square cos square theta by 2g. And what is this maximum height that I am actually calculating? This maximum height is this height. What is the maximum height reached by the projectile? This height. So if only I knew v and theta, my problems are over. I've solved the question. And if you look at the first two equations, you know, if you know the first two equations, if you look at the first two equations, then you can solve for v and theta. Let's do that. M cancel हो गया. यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है gl/2 माइनस gl 1 प्लस साइन थीटा, और यही v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए gl sin theta, right? So
I am equating the two equations. I am equating the two equations in the red boxes. ठीक है? हाँ, into two. हाँ, बिल्कुल सही शोना. Yes, thank you. ये into two. यहाँ पे GL, GL, GL कैंसिल हो गया. And I will get कितना आएगा? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया. अच्छा, यहाँ टू नहीं है, सॉरी. हाँ, so what will I get? I will get. बताओ भाई, किसने साइन थीटा निकाला है? साइन थीटा की वैल्यू बताओ. 2/3. So this gives me sin theta is equal to 2/3. And of course, if sin theta is equal to 2/3, then v square is equal to 2/3 GL under root, of course. So this guy becomes 2/3 upon 2 cos theta, cos square theta. अगर sin theta ये है तो cos square theta क्या होएगा? अगर 2/3 है 5/9. थैंक यू. 2g कैंसिल हो गया एंड वी गेट कितना? 5L/27. So H max is equal to 5L/27 plus L plus 2/3, which is equal to, शिवेन ने निकाला था, 50L/27. यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को. खुशी, जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ गया, तो मैंने एक्सिस ऐसे चूज की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि मेरे को केवल मैक्सिमम हाइट निकालनी. For the projectile, I have chosen horizontal vertical axis, y-axis, x-axis for projectile. अभी आ रहा है, थोड़ा सा ग्रिप बन रहा है. ये तीन चीजें अप्लाई करनी है. प्लीज रिमेंबर दिस. अगर वेलोसिटी आपको मालूम है कि √5GL और √2GL के बीच में है, then you have to apply these three things. Work energy theorem between initial and final points. At final point, T will be 0, but motion will be circular, so V square will be equal to GL sin theta, depending on where you have taken theta. It may be GL cos theta, अगर vertical के साथ theta लिया था. And then beyond that, you have to apply projectile. ठीक है? Ready for one more? एक और? नहीं भैया, ट्रेन लास्ट क्लास वाली जो ट्रेन थी उसने वर्टिकल सर्कल नहीं कंप्लीट किया था. जो ट्रैक का पोर्शन रिमूव हुआ था उस पोर्शन के बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट किया था. इट जस्ट सो हैपेंड दैट
it left tangentially at that point where the track was broken, and it rejoined tangentially where the track was again uh, made. है ना? टॉप मोस्ट पे टी जीरो नहीं हुआ है, फाइनल पॉइंट पे टी जीरो हुआ है। हार्दिक, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टी जीरो नहीं हुआ है, फाइनल पॉइंट पे टी जीरो हुआ है। हाँ हाँ, देखो ना, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, रियलिटी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल ये है, देखो। हाँ चलो करो दिस वन। क्या बोल रहा है हार्दिक? लोएस्ट वेलोसिटी तो टॉप मोस्ट में ही है। हाँ, तो उससे क्या हुआ हार्दिक? अपन को टॉप मोस्ट पॉइंट चाहिए ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी रूट 5 जीएल से कम होगी और रूट 2 जीएल से ज्यादा होगी, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होना है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अरे क्या हो गया तुम लोग को? ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ पे कील गाड़ी है, जहाँ से उसको टांगा है। तो हार्दिक, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी रूट 5 जीएल से कम होएगी और रूट 2 जीएल से ज्यादा होएगी, at some point the tension in the string will become zero before the velocity becoming zero. Velocity will never become zero, right? Tension will become zero. जिस पॉइंट पे टेंशन जीरो होएगा, उसके बाद से ये पार्टिकल फिर प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देगा। भाई ये वाला है क्वेश्चन वाला। हाँ, ये देखो ना, जो मैंने ग्रीन, ये स्लाइड में जो मैंने ग्रीन बनाया है, ये ग्रीन कहाँ पे आना चाहिए? ग्रीन कहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए? ग्रीन किधर फाइनली ग्रीन वाला
कर्व किधर हिट करना चाहिए, वही तो है ना, पाथ है ना पार्टिकल का। तो गायब हो गया, आई होप सबने स्क्रीनशॉट लिया था। आंसर मुझे याद है। Anybody gets the answer, I'll tell you whether it is correct or not.
इसमें मेरा नेटवर्क बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई. So basically, what we want is go up like this, and this is where it loses the tension, it loses the style to land here. Okay, so I will take the initial point, final point, so first I apply the work energy theorem between the points I and F. Summation of work plus work done by tension minus mgl1 plus sin theta minus mgl1 plus sin theta is equal to half mv square minus half mv naught square. Let this be v naught. अगर आपने पहले वाले को v लिया and I will get square is equal to v. मेरा नेट टेकिंग ये सब गायब हो जाता है 2gl 1 plus. This is the first rejection that we get. हाँ कंफ्यूजन हो रहा था
नेटवर्क थोड़ा चेंज किया है, देखो होपफुली अभी ठीक होना चाहिए। उसका भी भरोसा नहीं है, कम भरोसा। नहीं 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 नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है शोना। अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी क्लियर आवाज आ रही है? लेट्स होप दिस होल्ड्स। जब भी मैं खुशी को डाउट बताने जा रहा हूँ तभी एकदम ये हो रहा है। खुशी क्या कर रही है वहां पर? तो खुशी, द प्रॉब्लम दैट यू वर टेलिंग मी इज you are confusing between components of velocity and velocity. Kinetic energy is a scalar quantity. काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है उसमें जो v है वो हमेशा नेट वेलोसिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी में यू कैन नेवर टेक कंपोनेंट्स, दैट वुड बी अ मीनिंगलेस थिंग बिकॉज इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। Because kinetic energy is a scalar quantity, in this expression v is always the net velocity of the object and never the component of velocity of the object. So this is the tangential axis for circular motion. This is the radial axis. Forces acting on the object are mg. Radial force would be mg sine theta. Everything remains the same. So mg sine theta for radial axis is equal to mv square by L. V square is equal to gl sine theta. So v naught square is equal to But here there is no component of velocity v square. हाँ कोई कंपोनेंट नहीं है यार। सर उसका एक ही डायरेक्शन है। हाँ तो फिर भी क्यों इक्वेट, मतलब कैसे इक्वेट करें, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों का अलग अलग है। इसको इक्वेट कर रहे हैं। सर आपने जो रेडियल वेलोसिटी निकाला है सर्कुलर मोशन में, रेडियल वेलोसिटी v, हाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल साइन थीटा, हाँ हाँ हाँ, और जो काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर है वो नेट वेलोसिटी। हाँ तो वही नेट वेलोसिटी है ना। ये जो मैंने v लिखा है यही तो नेट वेलोसिटी है ना। बट सर उसका डायरेक्शन तो टेंजेंशियल है ना। हाँ तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल होता है। सर एम वी स्क्वायर बाय एल में v स्क्वायर बाय l एक्सेलरेशन होता है। ओ हाँ सर सॉरी। कोई बात नहीं, आ जाएगा। बिल्कुल नई नई चीजें हैं ना, तो यू विल गेट अ ग्रास्प। मेरे पास एक ये रिलेशन है। अब इसके बाद से वापस से यहाँ चलेंगे। नहीं 45 कहाँ से है? हाउ कैन यू से इट इज 45? Now I'm going to choose the horizontal vertical axis for the projectile motion. I will choose this as the x-axis and this as the y-axis, so that I don't have to deal with negatives. So I get ux is equal to v sine theta, uy is equal to minus v cos theta, right?
and I have taken the horizontal vertical xy axis. What we could have done, and I will do later on, so alternate projectile motion. I will do later on, but for the moment I have taken a horizontal vertical axis, right? So this angle is 90 minus theta. This component is V sine 90 minus theta. This component is V cos 90 minus theta. Yes, वही इसीलिए मैंने alternate projectile motion लिखा हुआ है ना, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ. Ax is equal to 0, Ay is equal to minus g. Now x is equal to L cosine theta, y is equal to L sine theta. Thank you. Okay, I hope everybody is remembering this from projectile motion. ये x और y कैसे निकाला मैंने? ये origin है, ये origin है और ये final point. ये origin है और मैंने यहाँ के कोऑर्डिनेट निकाले हैं. ये पूरा L है और ये वाला एंगल थीटा है. तो जो x कोऑर्डिनेट हुआ इसका L कोसाइन थीटा हुआ, जो y कोऑर्डिनेट हुआ वो L साइन. Okay, so now I can put this in the, I don't know, I can put this in the equation of trajectory. That is something I can do. I can figure out the x coordinate and the y coordinates separately and then eliminate time. Okay, I hope that you are realizing that any of these things that I decide to follow, any of these things, it is going to take a lot of time. Okay? It is going to take a lot of time. And here in the alternate projectile motion, I'll show you that we can do it in a very small amount of time, provided, of course, you remember certain things. But if you don't remember anything about projectile motion, all you remember is कि हाँ भाई ux, uy, x, ay, x और y coordinates निकालते हैं और उसके बाद से x is equal to uxt plus half axt square कर देते हैं, y is equal to uyt plus half ayt square कर देते हैं. Then this is the way that you will do. So I'm not remembering anything. So I get x is equal to uxt because ax तो 0 है, तो मेरे पास आ जाएगा L cos theta is equal to V sin theta t. Y is equal to uyt plus half ayt square. यहाँ से मेरे पास आ जाएगा L sin theta is equal to minus V cos theta t, right? Plus half gt square. So now what I can do is I can get rid of t. How do I get rid of t? Well, to get rid of t, I will write t as L by V cot theta. And therefore, I will get something like, I will continue here.
L sine theta is equal to minus V cos theta into T, which is L cot theta by V plus half GT square, which is L square cot square theta by V square. Now remembering that V square is GL sine theta, what I can do is I can rub out the V square here and I can write GL sine theta. Okay. The moment I do that, what will happen is that V will cancel out, G will cancel out, L will cancel out, and I will get a simple trigonometric equation which is sin theta is equal to minus cos theta into cot theta. कितना हो जाएगा? Cos theta into cot theta sin theta नहीं क्या हो जाएगा? Cot theta क्या होता है? मैं भूल गया. Cos upon sin होता है ना. So this will become cos square theta upon sin theta plus cot square theta upon sin. So this will give me cot square. Oh, 45 आ रहा है. किसने बताया भाई 45? Oh, yes. Again, theta is equal to 45. हाँ, ay प्लस जी. मतलब यहाँ पे मैंने माइनस जी लिख दिया लेकिन बाकी जगह मैंने प्लस जी दिया. वो आदत से मजबूर. यही गलती नहीं करनी है कभी. Right, now once you know theta is 45, then you know everything, right? Then you know what is V naught square. So this tells me that V naught, this tells me that V naught is equal to GL into 2 plus 3 by root. Right, and what you could have done, okay, was instead of taking the red and the red axis, you could have taken the inclined axis. And if you take the inclined axis, right, then you are going to get ux equal to 0, uy is equal to minus v. And then नीचे वाला डायरेक्शन प्लस लेके मैंने किया है. And then ax is equal to g sin theta. Ay is equal to g cos theta. X is equal to L. Y is equal to 0. To explain this, I will go to the next slide. Please take a screenshot. मेरा network अगर गायब हुआ तो सब गायब हो जाएगा. Please take a screenshot. Okay, I'll just go to the next scene and explain what I've done here. So we have inclined plane, projectile, and this angle is theta. This angle is theta, right? And the axis that we have taken is this. I have taken this as the x-axis, this as the y-axis.
Now remember that gravity is acting down like so. So this angle should be theta. This component of gravity should be g cosine theta. This component of gravity should be g sine theta. So I have ux is equal to 0 because पूरी velocity y axis के along है. uy is equal to minus v क्योंकि ऊपर मैंने negative y axis लिया हुआ है. ax is equal to g sine theta, as you can see. Ay is equal to plus g cos theta. And we want the projectile to land here. X coordinate of this point is L and the Y coordinate of this point is 0. Right? So I will get L is equal to half g sine theta t square, and I will get 0 is equal to minus Vt plus half g cosine theta t square. Right? So I get V is equal to half g cosine theta t. Right? एक t cancel हो गया. So t is equal to 2v upon g cos theta. हाँ रे आंसर. So L is equal to half g sine theta into t square. But remember that v square is equal to gl sine theta. So g square cancels out, and then एक 2 कहाँ गायब हो गया. एक 2 कहाँ गायब हो गया. हाफ. बताओ भाई 2 मैंने कहाँ गायब किया. Oh, v square is 2gl sine. Oh, sorry. GL sine. Right? This is alternate way of doing this, slightly faster, but the best way by far would be if you remember the range of a projectile on an inclined plane when the projectile is thrown down the inclined plane. So if you go back to your PDFs and मैंने शायद टेबल में दिया हुआ था range of a projectile down an inclined plane. And if you feed in all the values immediately in one step, you will get theta is equal to 45 degrees. But if you don't remember, and I don't expect you to remember, of course, क्या मैंने फिर कुछ गड़बड़ किया क्या? सर आपने t is equal to 2v by g cos theta लिखा तो वो 4v square होगा ना. v और v square is 2gl sin theta, तो एक 4 का फैक्टर कम नहीं है. फिर से बोलो. सर आपने t square सब्स्टिट्यूट किया ना, तो वहाँ पे 4v square होगा और v square is 2gl sin theta, तो वो 4 into 2gl sin theta नहीं होगा. परेशानी बढ़ा रही है लड़की तो.
ये कहाँ से मैंने गड़बड़ किया? L is equal to this, 0 is equal to this. P का वैल्यू सही निकाला ना मैंने? और V का वैल्यू क्या है? नहीं, V स्क्वायर तो GL sin थीटा ही है ना, 2GL का। फिर तो भी आपके पास 2 का फैक्टर रह जाएगा वहाँ पे। हाँ, वही तो ओरिजिनली मेरी प्रॉब्लम थी। एक मिनट मैं कर रहा हूँ। एक मिनट। सर मेरा भी सेम ऐसे ही हो रहा है, 1/2 आ रहा है। सर मुझे भी 1/2 आ रहा है। मेरे ख्याल से करेक्ट है, यहाँ गलती हुई है। Y is equal to U by T, L sin theta is equal to L is equal to plus half. ओ ये देखो ना, इसने 45 बताया था मेरे को। देखो ये गलती यहाँ हुई है। ये 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 मैंने यहाँ गायब कर दिया है, राइट? ये वाला 2 मैंने यहाँ गायब कर दिया। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आएगा। हाँ अब देखो, अब करो। ये आंसर गलत है एंड देयरफॉर ये आंसर गलत है। मैं बोला मेरे को आंसर याद था। आंसर इसका आता है 2 प्लस √2 GL sin थीटा। हाँ बोलो, आया ना? पकड़ आ गया ना? गलती पकड़ में आई? यस सर। फिर से सॉल्व करो इसको। ये वाला आप करो, ये वाला मैं करता हूँ। सो दिस इज रॉन्ग एंड आई गेट, हाँ ये सब मैं उड़ा देता हूँ। सो आई गेट L is equal to half G sin theta T square, and T square is 4V square by G square cos square theta. So L is equal to half G sin theta into 4V square. V square की value I can put now as GL sin theta divided by G square cos square theta. So what will get cancelled out? G will get cancelled out, L will get cancelled out, 2 will get cancelled out, and I will get tan theta is equal to 1 by √2. ये आना चाहिए और यही चीज यहाँ भी आनी चाहिए, राइट? यही चीज यहाँ भी आनी चाहिए। कैसे आएगी? 2 sin square theta, मैंने 2 sin theta कॉमन ले लिया, is equal to -2 cos square theta plus cot square theta. So we get cot square theta is equal to 2. Therefore, cot theta is equal to sorry about the mistake. And if cot theta is equal to, or tan theta is equal to 1 by √2, that means we have theta, this is 1, this is √2, and therefore this guy must be √3. 2 plus √2 नहीं, 2 plus √3 ऐसे करके आया। So the answer should be
sine theta is equal to 1 upon root 3 is equal to 1 upon root 3. So if I put this here, I should get 2 plus root 3. Now I remember this. V naught is equal to root of 2 plus root 3 GL. Sorry, this is the answer. Yes, 2 plus root 3. Yes. Okay, so this is the answer. I'll give you one more question, but ये आप अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. Again, the thing is the same, right? There is a particle, and the particle is suspended by a string of length L, and ये वाली slide. हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट. So there is a particle which is suspended by a string of length L, and one end of the string is fixed like that over there. And then the question says that after some time, the particle crosses a vertical line at a distance of L by 8 from string. So basically it crosses this vertical line where this distance is L by 8. So as it crosses, its velocity is found to be horizontal. Find V. Right? So ये IIT का क्वेश्चन है. ये IIT में बहुत पहले जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे तब का क्वेश्चन है. And I want you to try this, and I want you to in the next class tell me कि सबने कर लिया. ठीक है ना? बिल्कुल सेम अरेंजमेंट चलेगा, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. Right? Everything will be the same. I and F जब तक सर्कुलर मोशन हो रहा है, F पे सर्कुलर मोशन है, S मतलब I and F पे सर्कुलर मोशन हो रहा है. वन बाई थ्री क्यों होएगा? क्या हो गया दीक्षा? So circular motion between I and F, F पे circular motion, उसके बाद से projectile motion, right?
Please take a screenshot. I'm changing the slide so I can tell you the second condition. Please take a screenshot. I am moving to the next slide. This question you do tonight. We'll discuss this question tomorrow or in the next class. Okay? हो गया? So the next condition is, and we have already seen this condition before, the particle leaves the surface. Okay. Particle leaves the surface. इसका जो रेजोल्यूशन है ये आपने तो देखा हुआ है. Normal reaction is 0 at point where contact is lost. Okay. However, the motion can be considered as the previous motion at this point. Right, इसका मतलब क्या हुआ? जिस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होएगा, जिस पॉइंट जहां पे कांटेक्ट लूज हो रहा है, उस पॉइंट पे हम नॉर्मल रिएक्शन 0 कंसीडर करेंगे. बट even though we are saying that the particle has left the surface, at that particular point, at that boundary point, we can say that जो पहले मोशन हो रहा था वही मोशन उस पॉइंट पे भी हम कंसीडर करें. It is just like saying that in this problem यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कुलर मोशन हुआ. यहाँ पे टेंशन 0 हो गया, इसके बियॉन्ड प्रोजेक्टाइल मोशन होएगा. लेकिन just at this point you can say that tension is 0 and circular motion is there, and therefore you get this equation. So in the same way, at the point where normal reaction is 0, you can say that the motion is still circular अगर पहले circular हो रहा था. Okay, so let's do a question on this, and it's a very unique question, and I want you to tell me why you think it is unique, why it is unique. After the कहाँ the लिखा है? Surface.
So the question is that a particle is kept on top of a fixed smooth hemisphere and then it is slightly disturbed, slides down, and eventually, of course, it leaves the surface of the hemisphere. You have to find the angle theta when it leaves the surface. So, what do you think is unique about this question? What do you think is unique about this question? Anybody want to take a guess? फिजिक्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं नहीं सेंटर ऑफ मास से कोई लेना नहीं। हाँ नहीं 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 uniqueness is that nothing is given. Uniqueness is that no data is given. And whenever that happens, you can be sure that the answer will be a number. Okay? I have not told you mass of the particle, I have not told you radius of the hemisphere. Everything you have to assume yourself. Everything you have to assume yourself. And in the final answer, nothing should appear. नहीं नहीं 45. सर आपने वहाँ रेजोल्यूशन में कंसिडर्ड एज द प्रीवियस लिखा है Considered as the previous motion at this point. थैंक यू सर Very good, Shivan. Yes, excellent. बहुत बढ़िया. हाँ क्या लिखा पाती है देखा नहीं मैंने बिल्कुल सही पाती है
Okay, so पहले वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं. Summation of work done by earth plus work done by normal reaction plus mg कितना नीचे आया? Very easy to calculate now. R cosine theta r, so this must be r minus r cosine theta or r1 minus cosine theta, mg r1 minus cosine theta plus 0. Initial kinetic energy is 0. Final kinetic energy is half mv square. So mgr into 1 minus cos theta is equal to half mv square minus 0. Very good. Yes, sir. Now at this point, the particle is executing circular motion, but the normal reaction has become 0. That is the whole key. फाइनल पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, लेकिन अब ये सर्कुलर मोशन में है. इसके जस्ट बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि इसका प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से शुरू हुआ. रेडियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस. Force on the object is only mg, so this must be mg cosine theta. So along the radial axis then, mg cosine theta is equal to mv square by r. V square is equal to rg cos theta. So mgr into 1 minus cos theta is equal to half mv square, which is rg cos theta. mgr cancel हो गया. 2 minus 2 cos theta is equal to cos theta. 2 is equal to 3 cos theta. Right? Therefore, theta is equal to cosine inverse of 2 by 3. Very important result. Very important result. एंड अभी पिछले स्लाइड्स गायब हो गए, लेकिन अगर आप पिछले स्लाइड में जाके देखेंगे तो जो मैंने टेंशन निकाला था कहीं पे, तो उसमें ये फैक्टर्स आ रहे थे 2 और 3 के. मैंने एक बार गलत लिख दिया था, somebody corrected me that ये गलत लिखा होगा. राइट, आई डोंट थिंक यहाँ पे है, इस स्लाइड में है. हाँ यहीं पे तो है ना, ये ना. लुक एट दिस, ये 2 और 3 के फैक्टर्स आना शुरू हो गए ना, यहीं से ये आ रहा है. Okay, so I think we'll stop here. At this point, now you can do all the problem in HCV accepting potential energy and power. Power you can, or just wait until a couple of classes, then you can do that. Next class, we will continue with this. There are many more questions involving this, and I want to discuss all of them. And then in the next class, we'll start with potential energy. ठीक है? आ गया ना ये समझ में सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हेलो, very important result.
दिया है। छोड़ो। चलो ठीक है, so I'll see you in the next class. इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना? I can stop the this thing meeting. Okay. Sure. Bye bye. Good night. HCV, DC Pandey, जो भी किताबें हैं, now you can start with the booklet, of course.